कल हो या 10 दिन तक चले। Have talks been inconclusive between wrestlers and the authorities? संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। 3-member panel constituted to investigate charges enough? Why no suspension of Brij Bhushan pending inquiry? They made your heart swell with pride. They made you cry with happiness. They made you proud as an Indian. Today, they want your support. Where do you stand, India? Where do you stand, India? That is the question. These are the same faces where, the faces that made you cry, faces that made your heart swell with abject pride as you saw them take to the podium with the tricolour in their hand. Today, they are sitting, or they were sitting at least till 5 p.m. in the dead of winter, asking the country to believe them. These are Olympians. We raised certain questions through the course of the next 25 minutes. We're going to try and seek some answers as well. But two questions that come to mind immediately. Why is it so difficult to believe what they are saying? Number one. Number two, is a 3-member committee enough? Number three, why is it that nobody from the authorities has actually gone down to Jantar Mantar, even for sheer optics? What is stopping any of our ministers, any of our leaders, anyone concerned with who they are talking to go down there even for the sake of optics and hold their hand in front of the camera? Till now, there have been none. And ultimately, that one question that we've been asking from yesterday, suspension until probe. It's not that difficult to suspend Mr. Brijesh Sharan, the Wrestling Federation of India president, to suspend him pending probe. Why so difficult? Joining me over the course of the next 20 minutes is going to be Yogeshwar Dutt. He's a wrestler, he's an Olympian, he's also fought an election from the BJP, from the seat of Baroda in Haryana. And importantly, just last month, he has also been made a member of the IOA, the Indian Olympic Association. Joining me also is Mr. Mahavir Fogart. He's a wrestling legend. He himself has trained his 2 girls to become poster girls of wrestling in India. I am also going to be joined by Dipinder Hooda, Congress MP. Well, he stands accused of politicizing the entire issue. But I'd like to begin with Mr. Yogeshwar Dutt. Like I said, wrestler, BJP member, and also a member right now of the Indian Olympic Association. योगेश्वर दत्त साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, हमसे बात कर रहे हैं. बहुत गंभीर आरोप हैं सर. बहुत सारी लड़कियां इनमें से वो हैं जिनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर जो ओलंपिक मार्च में चले हैं. क्या सोचते हैं इन सारी एलिगेशन का? और आपके लिए भी दुविधा है क्योंकि आप उनके दोस्त होंगे, उनके सहयोगी होंगे, उनके साथ खेले होंगे, पर आप भाजपा में भी हैं और आप गवर्नमेंट अपॉइंटी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के. देखिए, आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप, और सबसे जो असली जो आरोप गंभीर आरोप है वो यौन शोषण का है, सेक्सुअल हरासमेंट का है. और मेरा मानना है कि इसमें खेल मंत्रालय को इसमें जांच करनी चाहिए, गृह मंत्रालय को इसमें जांच करनी चाहिए, और खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए. एक बार बैठ के उनसे क्या है जो भी है उनकी प्रॉब्लम हल करनी चाहिए उनकी, और इससे अलग क्या दिखते हैं. दत्त साहब, जो सारे खिलाड़ी हैं, जो बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि उनमें से ओलंपियंस भी हैं, उनमें से कॉमनवेल्थ स्टार्स भी हैं, उनमें से बहुत सारी बडिंग खिलाड़ी हैं जो उनके साथ बैठी हुई हैं, एक ही आवाज में बोल रही हैं. बुरा नहीं लगता कि कोई भी अथॉरिटी से उनसे जाकर मिला नहीं? चाहे कैमरे के लिए मिल लेते सर, हाथ पकड़ लेते कैमरे के साथ और बोलते देखिए हम आपके साथ हैं. देखिए, मेरी ये कमेटी भी आपसे बात हुई है, मेरी कमेटी के आपसे थ्रू पता लगा, मेरे को नहीं पता लगा क्या है. पर जो भी है खिलाड़ियों को संतुष्टि होनी चाहिए थी, संतुष्ट करना चाहिए था कि जो भी वो जिससे भी उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि खेल मंत्री जो शायद यहाँ पे नहीं है वो आज शाम तक आएंगे. पर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि इसकी पूरी अच्छे तरीके से हम जांच करवाएंगे, और जो भी है खिलाड़ियों को कहीं भी नुकसान हो, कहीं भी खिलाड़ियों के साथ गलत नहीं होने देंगे. दत्त साहब, जो खेल मंत्री हैं अनुराग जी, आप कह रहे हैं उनसे आपकी बात हुई है, उन्होंने आपको क्या अश्योरेंस दी है?
मैं ये दिया कि वो शाम तक शायद दिल्ली आ लेंगे और वो इस पे पूरी जांच कमेटी बैठाएंगे और कहीं भी खिलाड़ियों का नुकसान, खिलाड़ियों के साथ कोई चीज गलत नहीं हुई होंगे, जो चीजें उनकी जांच अच्छी तरीके से करेंगे और खेलों को आगे किस तरीके से क्या है, और हमारा वही उनका यही है कि बोले कि ये हमारा यही प्रयास है। और जो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे ऐसे यौन शोषण मामलों की बात हो, चाहे वो किसी भी खेल में, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त हमें नहीं है। दत्त साहब, जो बहुत सारी लड़कियां हैं ना जो आपके साथ खेली हुई हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, विनेश भी आपके साथ गई थी अगर आपको याद होगा, उन्होंने बोला है कि आप उनका साथ नहीं दे रहे क्योंकि आप भाजपा में हैं और आप अभी एक गवर्नमेंट अपॉइंटी हो गए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। नहीं, हाँ, मैं आईओ का एग्जीक्यूटिव मेंबर अभी बनाया हूँ मैं भाग इस फेडरेशन से, मैं कोई वो नहीं मैं आपको बता दूं, 2016 रियो ओलंपिक के बाद में आज तक मेरी एक या दो बार ब्रजभूषण जी से किसी उस पे बात मुलाकात हुई होगी। कभी मैं फेडरेशन का मैंने, क्योंकि आप मीडिया में मैं सुना कि उसने विनेश फोगाट ने बोला कि मैं खुद फेडरेशन की गोद में जाके बैठ गया हूँ। मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं कहीं किसी के आगे पीछे घूमूं, क्योंकि मेरे को ना कोई फायदा चाहिए, ना मैं कभी इसमें टीम का कोच लगाना, चीफ कोच, ना किसी और तरीके से मैंने उठाया। काम में मैं वैसा रहता हूँ जो भी मेरे काम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी सरकार ने ये हमें वो एग्जीक्यूटिव मेंबर चुना है और उसमें लिया है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि फेडरेशन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। आईओ में अभी नए नए 1 या 2 महीने में इसमें आया हुआ है और इसमें भी हमारा प्रयास है कि आईओ किस तरीके से इसमें अपना योगदान कर सकती है, किस तरीके से इसमें जो सर वो योगदान थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, 2 दिन हो गए हैं सर। किया जा सकता है जो आईओए है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, योगदान थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा दत्त साहब, 2 दिन हो गए हैं और बहुत सारे भारतीय उनको सही में दिल पे ठेस लग रही है कि जिन्होंने हमारे लिए मेडल जीते, खून पसीना बहाया, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पर एक और जो सवाल उठ रहा है योगेश्वर जी, ये भी उठ रहा है कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, चुनाव लड़ा है उनके टिकट पर, बड़ौदा से जो हारे भी थे आप, पर इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो खुद एक भाजपा के एमपी हैं यूपी से। देखिए, बात भाजपा की, बात कांग्रेस की है, वो नहीं, बात है खिलाड़ियों की, बात है देश की। ये मेरे लिए दोनों वो, ये कोई भी वो अलग वो चीजें नहीं है मेरे लिए। सभी मैं जो चीजें हैं मैं साफ और अच्छी नजर से देखता हूँ, एक नजर से, कोई अलग नहीं है कि भाई ये अगर वो भाजपा से, ये चीजें नहीं है। बात है कि कुश्ती में किसी के साथ गलत हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो वो चीजें हैं। मिलने जाएंगे दत्त साहब, आप जंतर मंतर मिलने जाएंगे क्योंकि ब्रिजेश, क्योंकि बजरंग पुनिया भी है वहां पर, बहुत सारे आपके सहयोगी हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी उनको लगता है कि आप साथ नहीं दे रहे हैं, सब सॉल्व हो सकता है। देखिए, मेरे को वहां पे मैं बताऊं आपको कि मेरे को भी आप लोगों के माध्यम से पता लगा, मेरे पास ना किसी खिलाड़ी का कॉल है, किसी भी खिलाड़ी का मेरे पास कॉल नहीं, ना मेरे को बताएगा कि ये चीजें हैं। ये क्यों कॉल नहीं आया मेरे पास, मेरे को खुद नहीं पता। कोई पहले, चाहे बात हो हरियाणा अवार्ड मनी की हो, चाहे खिलाड़ी के मेरे पास कॉल आते रहते हैं, चाहे बात अवार्ड मनी की हो, वो चाहे किसी कोई ये जॉब की बात हो, तो बहुत हर खिलाड़ी के जो भी पहले पीछे जो प्राइज मनी का 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में, तब भी मेरे पास खिलाड़ी में। पर इस घटनाक्रम में किसी भी खिलाड़ी, जितने भी यहाँ पे हमारे पहलवान बैठे, किसी का भी मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई कॉल नहीं है। योगेश्वर साहब, आप खुद एक रेसलर रह चुके हैं, किसी ने कभी भी आपको आके बताया कि देखिए हमारे साथ ये आप बीती है, हमारे साथ जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कर रहे हैं, या कोच हैं ये कह रहे हैं, कोई आकलन था कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, कभी इक्का दुक्का किसी ने बोला कि ऐसी चीजें कुछ है, मगर भाई आप किसी को सामने लेके आइए। आप कोई लड़की है तो उसको मेरे से मिलवाइए, आप, हम खड़े होंगे, उसका नाम भी नहीं आने देंगे। पर जैसे किसी आपने बोल दिया मेरे को, किसी लड़की का नाम नहीं बताया, तो हम कहाँ खड़े होंगे फिर? अगर ये विनेश ने, आप सोच कीजिए, विनेश ने जो बात बोल रहे हैं कि अगर कोई लड़की नहीं आएगी तो फिर क्या होगा उस चीज का। हम भी वहीं पे थे जब कोई 1-2 बार ये बात आई हमारी पास थी, ये कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, तो वो चीजें थी कि भाई कोई सामने नहीं आना चाहता। अब सामने नहीं आना चाहता तो हम कहाँ जाके लड़े, किसके साथ हम लड़े, आप खुद बताइए। अगर मैं आपको कोई बात बता दूं, आपके मैं उस बात को आपको प्रूफ ना दूं, तो आप कहाँ जाके लड़ाई लड़ोगी? दत्त साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, थैंक यू।
I want to cut across right now to Mahavir Fogart. Mahavir Fogart is a wrestling legend in his own right, also the father and the first trainer of two of the poster girls of wrestling, Geeta and Babita Fogart. Mahavir ji, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की. आपसे पूछना चाहूँगी, खुद कोच रह चुके हैं, तो ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं यौन शोषण के, बहुत कोचेस पे भी लग रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है? आपको पता था? विनेश आपकी भांजी है, क्यों ये इल्ज़ाम लग रहे हैं? इनमें कितनी सच्चाई है? कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज जो जंतर मंतर पर जो लड़कियां, जो रेसलिंग के जो बच्चे बैठे हैं, जो ये तो कोई अंत किसी चीज़ को जो न अंत आ जाता है ना, तो उससे आगे कोई, जब ये आज जंतर मंतर पर बैठे हैं और जो आरोप लगाए हैं जो बच्चों ने, ये कोई भी लड़की एकदम कोई लगा नहीं सकती इसके में जो आरोप है जो इन्होंने लगाए हैं. हर एक के जो माँ बाप होते हैं शर्मसार होते हैं, लेकिन जो अंत आ जाता है जब ये आरोप लगाए हैं जो लड़कियों के आरोप में बर्फ उसने की, जो मैंने एक भाषा सुनी थी, अगर एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं फांसी को जो लटक जा, तो अगर निष्पक्ष जाँच करेगी ना, तो ये तो फांसी का फंदा अपना बेशक दे तैयार गल में गाने के तैयार हो जाए. ये झूठी बात नहीं जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं. महावीर जी, आप ताऊ रहे हैं, जो दंगल है, रेसलिंग है गांव में, खुद आपकी दो लड़कियां हैं, आप खुद जानते हैं कितना मुश्किल है छोरियों के लिए हरियाणा में आगे बढ़ना. अब जब यौन शोषण के आरोप लगे हैं तो कितने गंभीर देखते हैं? अब गांव-गांव में क्या जो माता पिता हैं अपनी छोरियों को भेजेंगे क्या? देखिए, मैं तो शामिल नहीं, जो लड़कियों के आगे जो बात आई हुई, लड़कियों को जो बहुत गंदी नज़र से देखता था, गंदा व्यवहार था, किसी को कैसी धमकी दे देता था, किसी को कुछ कैसी धमकी दे देता था, किसी को कह देता, बोलता तो मैं तेरे को जो 2 साल तेरी कुश्ती ख़राब कर दूंगा. जो लड़कियां बता रही हैं, जो मेरे पास जो समाचार आए हैं, भाई तेरे को जो अनुशासनहीनता का नोटिस देकर तेरे को 2 साल बाहर कर दूंगा. तो डरते डरते बच्चे आज तक बोले, लेकिन मैं हिम्मत मानता हूँ जिन बच्चों ने जो आवाज़ उठाई है इन बच्चों ने, और जो ने अगर इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा सरकार पर, जो हमारे जो मोदी जो बच्चों से प्रेम प्यार से जो मिले हैं, कॉमनवेल्थ में मिले हैं, एशियन गेम में मिले हैं, ओलंपिक गेम से जो मान सम्मान दिया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो इसका समाधान होगा और सरकार निकालेगी. महावीर जी, विनेश आप ही की भांजी है, बहुत सारी लड़कियां, अंशु, ये सारी जो लड़कियां हैं आप इनको हुबहू खुद जानते हैं. अब ये सवाल पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये यौन शोषण इतने वक्त से हो रहा है तो अब क्यों उठाया गया, पहले क्यों नहीं उठा रहे थे? देखिए, बस जो बच्चे कुश्ती करते हैं, मतलब एक परिवार में झगड़ा चल को ऐसे जो कुश्ती संघ का परिवार है, ये अगर ये बात करी है तो इस तरह पुलिस में रिपोर्ट तो यूँ नहीं दी, पर जो समाधान जो फेडरेशन कर रहे जो अध्यक्ष हैं योग करके नहीं स्टेप उठाया. लास्ट में जो समाधान होती है, यहाँ तक भी नौबत आई तो वो काम भी होगा. महावीर जी, एक बात तो सत्य है कि अपना जो पूरा इन्होंने करियर है, अगर मान लीजिए कुश्ती का दाव पे लगा दिया है, हिम्मत वाली बात है, पर इसका मैसेज क्या जाएगा महावीर जी? बहुत मुश्किल है. हरियाणा ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कि अपनी लड़कियों को अखाड़े में भेजें, लड़कों के साथ कुश्ती लड़वाएं. खुद जानते हैं आप पे आप बीती है. देखिए, देखो ऐसी बात है जी, जो कोई ज़िंदगी में रिस्क लिया बगैर तो कोई समाधान होगा नहीं. बस जितने साल हो गए जो इसकी बात सही गई, लड़कियां सही गई, आज जो आवाज़ उठाई है तो ये हिम्मत करके उठाई है, पता भी नुकसान करेगा. जिस तरह मैंने सुना ब्रजभूषण का जो वर्ड है, भाई 28 साल से ऊपर कुश्ती लड़ नहीं सकती, ये होते, ये उसके झूठे बयान. आज हमारे योगेश दत्त ने देख लो कब मेडल लिया था, सुशील का देख लो, ये क्यों झूठी बकवास कर रहे हैं. जो 25-22 साल के बाद में तो बच्चे ने ज्ञान होता है, ये नहीं कहता है इसके बाद में मेडल नहीं था, झूठा, इसने ज्ञान नहीं कुश्ती. ब्रजभूषण ने कुश्ती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है. महावीर जी, जो इसमें आरोपी हैं ब्रिजभूषण जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब एक रचाया हुआ प्लॉट है उनको डिफेम करने का, उनकी बेइज्जती करने का.
ना ये बिल्कुल गलत सोच है, ना कोई इन बच्चों की कोई सोच है नहीं। जो फेडरेशन सर्व ब्रजभूषण के ऊपर जो सब जो दादागिरी कर रहा है बाहुबली, एक तो होता है जो खान माफिया सुना था हमने, लेकिन रेसलिंग माफिया जो ब्रजभूषण तो बड़ा कोई है नहीं है, जिन्होंने जो है अपनी मन की मर्जी चला रखी है। अपना जो कानून बनाता है अपना खुद का कानून बनाता है। आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपके संज्ञान में महावीर जी ये कब आया, किसने आपको बताया और आपने उनको क्या बोला कि आप जाकर ये संघर्ष लड़ो, ये लड़ाई लड़ो, हिम्मत दी? देखो जो लड़कियां होती है सिर्फ माँ के आगे कुछ बता सकती, बाप के आगे बहुत कम बताती हैं। तो ये जितना कल से चर्चा चल रही है, तो इसकी जो गीता की मम्मी ने तो बात बताई थी, जो आप यहाँ नहीं बता सकता। जो लड़कियों की जहाँ 2 हरकत हुई है, तो गीता की माँ बता रही थी, गीता ने जो या गीता ने उसकी मम्मी ताएँ बताई भी ऐसा आदमी है ये ब्रजभूषण जो चर्चा है। तो गीता की माँ मेरे कल बता रही थी भी ये चर्चा मेरे आगे आई थी, फलानी लड़की थी। तो महावीर जी आप कह रहे हैं कि गीता जो आपकी लड़की हैं, विनेश की कज़न है, उनकी माँ ने आपको बताया, गीता बबीता की माँ ने आपको बताया जो आपकी बीवी हैं, और तब आपको पता चला। मैं जानती हूँ ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि हरियाणा में बहुत कम बातचीत होती है यौन शोषण की। बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। पर बाकी जो जितनी भी लड़कियां हैं, अगर कहा जाए, हरियाणा में एक कहावत है कि अगर हिम्मत दिखाई है तो छोरियों ने लठ गाड़ दिया है, और इसके लिए जो भी है ये लड़ाई है। इंडिया टुडे जो हमारा चैनल है इनके साथ हैं और इनको जस्टिस जरूर मिले, यही हमारी आशा है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। विद दैट आई वांट टू क्विकली रैप दिस एडिशन ऑफ न्यूज़, बट आई वांट टू कट अक्रॉस to that small short interview that I did with Dipinder Hooda from the Congress party. He hails from Haryana and he today is being charged of politicizing the entire issue. Joining me right now is Dipinder Hooda again. Appreciate you joining us, Mr. Hooda. But the fact is, you are being now, it's being said that you are politicizing, alleged the entire the wrestling controversy that has erupted. But I want to ask you, most of these girls, even Bajrang, even the other wrestlers who are sitting there, it's not just sexual harassment, they want sweeping changes where the entire Wrestling Federation of India is concerned. My question to you, sir, is, you come from Haryana, most of them come from Haryana. These are grave allegations where if these young girls are saying they've been sexually harassed, why is it that nobody, especially where the government is concerned, has come down to even meet them once? See, there are many things, Preeti. First of all, when the last time when we connected and you had characterized the question as, accusation of politicizing or Haryana versus Uttar Pradesh. First of all, these are internationally renowned athletes. They have won medal in Olympics. And every time they won a medal in Olympic or Asian Games or Commonwealth or World Championships, it's the flag of India that goes up. It's our national anthem that's played. It's not flag of a state. They belong to our country, and it's responsibility of our country to take care of them. Number one. Number two, I think yesterday and today they mark the blackest day in the sports history of this country. Never before such grave allegations have been leveled against any sports body or federation or any particular individual, and by so many renowned athletes coming together. The entire wrestling world of India is sitting at Jantar Mantar. Those athletes, they're sitting at Jantar Mantar. Those wrestlers, they represent 60% of your Olympic medals in the last 3 Olympics. You cannot underestimate what is happening and what has happened. One question is of irregularities. Like you said, there are 2 demands that they have made. One is of irregularities in the Wrestling Federation. Absolutely, there have been complaints of irregularity in the Wrestling Federation for the last 3 or 4 years. In fact, I wish to tell you that I myself, I was the president of Haryana Wrestling Federation when there was a lot of such allegations of irregularities and of Pakshpat, and we were raising this issue. I was not a convenient voice for the But Mr. Hooda, that's where I want to come in, because you say you were the president, and I understand you were the president where Haryana Wrestling Federation was concerned. But the same person, the same individual has been the president of the Wrestling Federation of India since 2011, sir.
Congress was in power till 2014. I agree. So no, sorry. So now let me get to that. In 2012, there was an election in which Brij Bhushan, I was pitted against Brij Bhushan. It was a fiercely contested election and he won. After that, because we in our state worked very hard to create an environment where parents would even allow their daughters to come in the field of wrestling and sports. Now, this is what, unfortunately, this is diverting the issue. But yes, so he, after 2 or 3 years of taking over as the president, there started cropping up allegations of the way he was running it like a fiefdom. And I was the president of Haryana. We were bringing in most medals. I raised the voice and people were raising the voice, but he was running it like with a lot of irregularities. Yes, the allegations of sexual exploitation have just come up yesterday. Even I was not aware of them before yesterday. Now, let me come to the point, Preeti. Main thing is, they have made 2-3 demands. First demand that they have made is the Wrestling Federation should be dismissed. The government should not lose any time to ensure that this happens. The second demand is about justice. They have said that they'll go to the police and register FIR tomorrow. But my demand to the government, as a citizen of this country, not as a citizen of a particular state, not as somebody who is belong to a political party or who's a member of parliament, but as a citizen of this country, I expect the government to come forward. The Prime Minister should come forward. He has coined slogans like Khelo India and Beti Padhao, Beti Bachao. Those slogans ring hollow today. They have to come forward and tell the nation what actions they are taking to restore the faith in the sports system. Otherwise, who will send their daughters and their children to pursue careers in sports? If you don't take action or you go quiet, the silence, the last 2 days, the silence from the governments is deafening. And there are 2 actions. One, dismissal of the Wrestling Federation, and 2 is criminal action. There have been criminal complaints. Even if, the complaint is not filed for the obvious reasons that, the wrestlers pointed out, they do not want to reveal their identity. The government should suo moto start an investigation. And such serious offences have been alleged. Mr. Huda, what is the government saying is that a 3-member panel has been set CBI up. inquiry. I understand you demand a CBI inquiry, sir, but my question to you also, Mr. Huda, is, which I asked you in the beginning as well, which is, now there is a parallel, a train of thought, which consists of a fact that this is a Uttar Pradesh lobby versus the Haryana lobby. And it is because the president is from Uttar Pradesh, it is Preeti, the backroom. You are a woman yourself. I understand, sir. It is... No, but you have to understand this. This is highly objectionable to anyone, any citizen of this country. If all the Kabaddi team, 100% of the Kabaddi team comes from Haryana, does that mean that something is wrong? If in our Indian hockey team, 7 players are coming from Haryana, is that mean something wrong? So what is this Uttar Pradesh versus Haryana? Haryana has done well in sports, but they are all Indian sports, Indian flag holders. They are Indians first. We are Indians first. And if our sisters are asking for justice, it cannot be a Uttar Pradesh versus Haryana. If guilty is a guilty. And that is why the reason why I have asked for a CBI inquiry is because this 3-member committee that you are saying Anurag Thakur is constituted or considering to constitute in the sports ministry. See, the 3-member, any sports ministry can constitute a committee to look into irregularities of functioning of federation. Till that point, I accept it. The federation is dismissed, 3-member committee is constituted to look at the irregularities there. But if a criminal complaint is there, if a criminal offence is there, Constitution provides for investigation agencies of a criminal offence, and there are only 2 possible. One, the state or the centre. State means state police and centre means CBI, Central Bureau of Investigation. They can only look at criminal offences. All right, viewers, the latest news break just coming in. It seems right now that the Indian Olympic Association and Rajya Sabha MP Preeti Usha has spoken up for our wrestlers, tweeting out, saying, in official capacity as IOA president, I have been discussing the current matter of wrestlers with members, and for all of us, the welfare and well-being of the athletes is
topmost priority of IOA. We request athletes to come forward and voice their concerns with us. We will ensure complete investigation for justice. We also have decided to form a special committee to deal with such situations that may arise in the future for swift action. All right, viewers, with that, it's a quick break. To stay with us on the other side is Rahul Kamal coming in from Davos. The fear is that while India's population seems to now be outstripping that of China, where are the jobs, the opportunities going to be created for this large population that we are confronted with? How do you see these numbers that are staring us in the face now? I mean, population was a curse. Obviously, a demographic dividend is not people, it is productive people. And I think we have to sort of put this in context. India's unemployment numbers have stayed between 4 and 8% since independence. But our poverty has been 35–40%. So I think the question to ask is really, do we have a jobs problem or a wages problem? I don't think we have a jobs problem. Anybody who wants a job can get a job, they just can't get the wages they want or the wages they need. So I would be careful with framing, linking population directly to jobs. I think we need to think about productivity, we need to think about wages. I mean, China had a huge advantage. I mean, in 1985, the trade deficit with the US was $6 billion. Now it's $310 billion. That happened because of China's population and obviously China's ability to make the 5 transitions which we call modernity, right? Farm to non-farm, rural to urban, informal to formal, school to work. So I would be careful with just saying a population is a curse. I mean, I think actually China losing a population equal to France, a working age population equal to France in the next 7 years is a child of their one-child policy, while India has a more organic control of our population. So I would be careful with positioning populations as either curses or as gifts. It's what you do with your population and can you make them productive. And we've proven that 5 million people in India can export more software than Saudi Arabia did oil last year, or 15 million Indians outside India can send us $100 billion of remittances. So I would just position this more as a productivity problem than a jobs problem. So interestingly, you're saying don't get into the binary of demographic dividend versus disaster. You're actually suggesting look at issues of productivity. With